I just want to take a few 5-10 minutes to talk about how Jainism, how Deepavali came about in Jainism. I'm going to switch to Hindi. Please bear with me because I feel more comfortable speaking in either Hindi or Gujarati than English or something like this. Okay, so first of all, दिवाली जो होती है वो क्यों हम मनाते हैं? दिवाली जो है वो हमारे जैनिज्म में उसको पर्व कहा गया है, उसको त्योहार नहीं कहा गया। अनलाइक हिंदुइज्म या फिर दूसरे जो लोग त्योहार मनाते हैं जैसे कि होली है, धुलेटी है या फिर उत्तरायण है, मकर संक्रांति है, उन सबको त्योहार कहा गया है। लेकिन जैनिज्म में दीपावली को पर्व कहा गया है। तो पर्व क्यों कहा गया है? पर्व इसलिए होते हैं कि उसमें आप तपस्या कीजिए, आप अपने भगवान को याद कीजिए, आप जैसे कि दिवाली में सरस्वती देवी की पूजा कीजिए। तो इसलिए पर्व इसलिए होते हैं कि आप अपने आत्मा का कल्याण करें, आप अपने आत्मा का उद्धार करें और आपके जो भोगों के जो भ्रमण है उसको कम करें, इसलिए पर्व होते हैं। जैसे पर्यूषण को भी पर्व कहा गया है, उसी तरह दीपावली को भी एक पर्व कहा गया है। तो पर्व क्यों होता है और दीपावली में हम क्या करते हैं? तो दीपावली में हम लोग दिया जलाते हैं, जैसे कि हमने अभी यहाँ पे ट्राई किया था दिया जलाने का। तो दिया क्या है? दिया पहले के जमाने में ये सब लाइट्स जो है, ये टी लाइट्स यहाँ पे जो लगाई हुई है, ये जो बाहर हेलोजन लाइट्स होती है, वो सब लाइट्स नहीं थी। पहले क्या था? आई एम टॉकिंग अबाउट मे बी बिफोर द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पहले सिर्फ दिया ही था। तो दिया क्या होता है? दिया ज्ञान का प्रकाश होता है। दिया का डायरेक्ट कनेक्शन होता है मां सरस्वती से। दिया जलाने से क्या होता है? अंधकार दूर होता है और उजाला होता है। तो इट सिंबलाइजेस दैट यू आर गोइंग टुवर्ड्स द पाथ ऑफ नॉलेज एंड यू आर रिमूविंग डार्कनेस फ्रॉम योर लाइफ। दैट इज वन रीजन व्हाई वी सेलिब्रेट दिवाली विद अ दिया। सो जब भी दिवाली आती है तो हमारे मन में पहले ख्याल क्या आता है कि हमें दिया जलाना है, हमारे घर के बाहर दिया लगाने हैं, हमारे घर में जो पानी का एरिया होता है वहां पे हम दिया लगाएंगे, घर के बाहर दिया लगाएंगे, भगवान के सामने दिया लगाएंगे। तो दीपावली में तुरंत हमें दिया का याद आता है बिकॉज वो दीप जो प्रतीक है वो ज्ञान का प्रतीक है और इट्स अ सेलिब्रेशन ऑफ राइट नॉलेज एंड ओवरकमिंग द डार्कनेस विद इन अस। तो दीपावली में एटलीस्ट गुजराती कैलेंडर में 5 दिन की दीपावली होती है। पहला दिन जो होता है शुरू होता है वो वीर संवत, not I'm sorry, this should be Vikram Samvat, my bad. So this should be Vikram Samvat or Vid Samvat Asovat Paras, जो पहला दिन होता है दिवाली का। That day is a misnomer, कई लोग उसको भाग पारस, भाग यानी शेर, शेर के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। बट यू माइट सी कि व्हाट्सएप में आपको बहुत सारे फॉरवर्डेड मैसेजेस आएंगे जिसमें भाग का आपको पिक्चर आएगा और उसमें लिखा होगा हैप्पी भाग पारस। इस दिन का वाक के साथ कोई, द ट्रू नेम इज वाक, वाक नॉट वाक, वाक। तो वाक क्या है? वाक यानी सरस्वती। तो ये दिन जो है वो सरस्वती के लिए होता है, जो आपके ज्ञान, आपका नॉलेज, आपकी इंटेलिजेंस, आपके थॉट्स, आपके अंदर के जो स्मार्टनेस, आपका ब्रेन है उसके साथ लगता है। तो ये दिन हम सरस्वती की पूजा करते हैं एंड उसमें हम लोग दिया जलाते हैं। और कई लोग इस दिन को, जैसे हमारे सत्यसाधी जी भगवंत होते हैं, इस दिन को सरस्वती की बहुत बड़े जाप करते हैं, वो लोग पूरी रात जाप करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको राइट नॉलेज चाहिए। तो ये दिन साल में एक ही बार आता है व्हेन यू कैन डू सरस्वती की पूजा, ज्ञान पूजा होती है सबसे पहले। उसके बाद आता है दूसरा दिन विक्रम संवत आसोवत तेरस। अभी ये दिन बहुत सारे लोग धन की पूजा करते हैं। दैट्स नॉट ट्रू। धन की पूजा के साथ दिवाली को कोई लेना देना नहीं है। इसको, ये दिन को कहते हैं धन्य तेरस। तो धन्य तेरस क्यों कहा गया है? क्योंकि वीर कबरू को जब वो वहां हयात थे, when he was living, he realized that his last time is coming. He doesn't have a lot of time left and he is about to leave this world. So he started his last 16 प्रहर sermon, जो उनके लास्ट 72 आवर्स या 48 आवर्स के जो sermon थे वो उन्होंने शुरू किए। तो इसलिए इस दिन को धन्य तेरस कहते हैं। इसको धन के साथ कोई लेना देना नहीं है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लोगों ने धन्य में से यह निकाल दिया और धन बना दिया।
और हो गया धनतेरस। तो उस दिन फिर लोग पूजा करते हैं लक्ष्मी की। बट वेरी इंपॉर्टेंट, लुक एट द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। पहले सरस्वती, उसके बाद लक्ष्मी। विदाउट राइट नॉलेज यू डोंट हैव द राइट कंडक्ट इन योर लाइफ। जैसे हमारे जैनिज्म में कहते हैं राइट नॉलेज राइट कंडक्ट। Without right knowledge, you don't have the right knowledge, doesn't matter how much money you have. If you don't have the morals, if you don't have the ethics, what's the point of having that much money, right? So हमेशा पहले सरस्वती की पूजा, उसके बाद लक्ष्मी की पूजा। और हमने भी आज पूजा किसकी की? महावीर स्वामी की, गौतम स्वामी की, और फिर सरस्वती की। यहाँ पे लक्ष्मी जी कहीं पे भी नहीं, राइट? लक्ष्मी जी है यहाँ पे जो डॉलर हमने रखे, जो देव पूजा, जो द्रव्य पूजा होती है, देव द्रव्य पूजा होती है, उसके लिए हमने पैसे रखे। बट देयर इज नो लक्ष्मी जी की मूर्ति भी नहीं है, लक्ष्मी जी का फोटो भी नहीं है। हमेशा whenever next year अगर दिवाली आती है तो रिमेम्बर दिस। बाय द वे, ये जो पाक बारस है, इट्स अ वेरी गुड डे फॉर योर किड्स टू डू सरस्वती पूजा। इट्स अ वेरी गुड डे फॉर एनीवन हु इज सीकिंग नॉलेज। अभी जैसे मैं जॉब कर रहा हूँ, राइट? मेरे जॉब में भी कई सारी चीजें जो मुझे नहीं पता है। आई नो देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर मच स्मार्टर देन आई एम, एंड इफ आई वांट टू लर्न, I want to understand the things that I am tackling with every day. This is the day to take blessings from Saraswati Devi. फिर उसके बाद आता है आसोवन चौदस, जिसे कहते हैं काली चौदस। पूरे साल में ये एक ही दिन आता है जब you go and do meditate and sadhana. अभी इसको काली चौदस क्यों कहा? तो इस दिन नॉट इन जैनिज्म बट बाहर के लोग, अब जो अघोरी बाबा कहते हैं ना, जो रात लगा के घूमते हैं, वो लोग इस दिन काली विद्या जो होती है उसकी तपस्या करते हैं। जो who wants to conquer evil powers or black powers or black magic, इसकी पूजा होती है, उसकी वजह से उसको काली चौदस कहा। लेकिन जैनिज्म में ब्लैक पावर्स, इविल पावर्स अलाउड नहीं है। ये दिन यू कैन ऑल्सो यूज इट फॉर साधना। तो तीसरा दिन जो होता है ये काली चौदस का, उस दिन भी हमारे शास्त्री भगवान उस दिन भी शुरुआत करते हैं अपने तपस्या की, और फिर वो दो उस दिन छठ की शुरुआत करते हैं, मीनिंग फास्ट फॉर 2 days। और महुड़ी, अगर आप गुजरात में कहीं कभी भी गए हो तो महुड़ी में घंटाकरण का बहुत बड़ा सेंटर है, वहां पे हवन होता है एवरी ईयर, लाखों लोग आते हैं। As far as I know, every single chief minister of Gujarat has gone to Modi to get घंटाकरण means blessing. He is very powerful, extremely powerful। अगर आप अच्छे से ध्यान से उनका मन से प्रार्थना करेंगे और कोई संकल्प करते हैं कि भाई आई विल, अगर ये मेरा कार्य हो जाता है, मैं घंटाकरण भी ये ब्लेसिंग्स दूंगा, whenever I go to India, आपका कार्य होगा और होगा ही 100%। I can vouch for that. I have experienced it myself several times in my life, and I can tell you, if you are having any difficulty in your life, घंटाकरण मेरे को याद कीजिए और बहुत उनको भाव से याद कीजिए, और महुड़ी में जाके फिर उनको सुखड़ी चढ़ानी होती है तो महुड़ी में जाइए। पर वेरी इंपॉर्टेंट, जब आप महुड़ी में जाते हैं तो उसके बाजू में घंटाकरण का जो मंदिर है उसके बराबर बाजू में चंद्र प्रभु का मूल नायक, पद्म प्रभु का मूल नायक का बहुत बड़ा अपना देरासर है। डू नॉट फॉरगेट टू डू पूजा, क्योंकि तीर्थंकर के आगे कोई नहीं आता। घंटाकरण वीर जो है वो तीर्थंकर के सेवक है, इट्स नॉट द अदर वे अराउंड। पहले सेठ आता है विच इज तीर्थंकर, उसके बाद अपने उसके नौकर आते हैं विच इज घंटाकरण वीर। Not trying to reduce the importance of घंटाकरण वीर by saying that, but what I'm trying to say is पहले हमेशा सेठ होते हैं, फिर उसके बाद उनके यहाँ जो काम करते हैं वो आते हैं। तो जैसे मणिभद्र वीर है, घंटाकरण वीर है, वो सब बाद में आते हैं। So if you are, again, I have experienced this personally, and I'm just telling you guys, again, if you want to try it out. It's घंटाकरण वीर's blessings is just I cannot I don't have words to describe it. और ये जो हवन होता है ना, तो कई बार वो लोग लाइव भी देते हैं, लाखों लोग आते हैं, नॉन जैन्स दोनों आते हैं। दूसरी बात, ये घंटाकरण वीर जो है, पहले अबाउट 100 years पहले यहाँ पे कुछ नहीं था महुड़ी में। विमल सागर सूर्यवंशी महाराजा जो अभी तमिलनाडु में चेन्नई में उनका चतुर्मास चल रहा है, उनके समुदाय में बुद्धि सागर सूर्यवंशी हुए थे और 100 years उन्होंने इस घंटाकरण को प्रकट किया था और उन्होंने वो महुड़ी तीर्थ की स्थापना की। तो और उन्होंने
बुद्धिसागर सरस्वती जी को कहा था कि जो भी वीर प्रभु के पंथ पे चलते हैं उनके लिए ज्यादा फल। तो जो भी जैन से जो अहिंसा के पथ पे चलते हैं, वीर प्रभु के मार्ग पे चलते हैं, उनको घंटाकर वीर ज्यादा ब्लेसिंग्स देते हैं कंपेयर टू अदर नॉन जैन। और इसकी पे पीछे भी बहुत बड़ी कहानी है। ये घंटाकर वीर की स्थापना क्यों की थी बुद्धिसागर में, बहुत बड़ी कहानी है। आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू इट बिकॉज़ ऑफ लैक ऑफ टाइम, but it's a very hair-raising story, and there was a very good reason why this was done. फिर लास्ट डे आता है विक्रम संवत आसोवन मास अमावस्या। This is the last day of our lunar calendar. It is also known as दीपावली। इसको दीपावली क्यों कहा गया है? क्योंकि इस दिन रात को तीसरे प्रहर में somewhere around after 3 o'clock in the morning, वीर प्रभु left this world. तो उनके चले जाने के बाद पूरी दुनिया में सबको लगा कि ज्ञान का दीपक जो है, ज्ञान का दिया जो हमारे बीच है, वो चला गया। तो उस टाइम के जो राजा महाराजा थे, वो ज्ञान को चालू रखने के लिए उन्होंने हर जगह पूरे गांव और शहरों में दिए जलाए और उस पर से दिवाली आई। दैट इज हाउ जैनिज्म सेलिब्रेट्स दिवाली। अच्छा, नॉन जैनिज्म में लॉर्ड कृष्णा किल्ड नरकासुर ऑन दिस डे, और लॉर्ड रामा, उनका रावण के साथ युद्ध हो गया, फिर वो वापस अयोध्या आए। तो कहा जाता है कि वो रावण का जो देव विमान था, इट वाज ए एरोप्लेन काइंड ऑफ एरोप्लेन विमान, उसमें बैठ के आ रहे थे और रात का समय था। तो जो अयोध्या वाले थे उनको लगा कि अगर राम भगवान ऊपर से चले जाएंगे, उस टाइम तो रनवे सब नहीं था, राइट, अंधारा होता है रात को, तो पता नहीं चलता है ना कि ये कहाँ पे हुआ। तो अयोध्या वालों को हुआ कि भाई हम लोग ये चलाए ताकि राम भगवान को पता चले कि ये अयोध्या नगरी है और वो हमें मिस ना कर जाए। तो उसकी वजह से हिंदुइज्म में दीपावली की शुरुआत हुई। और द लास्ट थिंग इज कार्तक वध एकम। सो नाउ दिस इज द लास्ट डे ऑफ द लूनर कैलेंडर। जो हमारे लूनर कैलेंडर में 15-15 दिन के दो सेक्शंस किए हुए, एक सुद पक्ष और एक वध पक्ष। सुद पक्ष इज राइजिंग मून, वध पक्ष इज डिसेंडिंग मून। तो उसमें लास्ट डे आता है अमावस्या, उसके बाद नए महीने की शुरुआत होती है। बट इन दीपावली इट्स द स्टार्ट ऑफ अ न्यू ईयर, सो इट इज कॉल्ड विक्रम संवत कार्तक वध एकम, व्हिच इज द स्टार्ट ऑफ अ न्यू ईयर एज पर आवर जैन कैलेंडर। और इस दिन सुबह रात को 3 बजे महावीर स्वामी भगवान का निर्वाण, he left this world। फिर गौतम स्वामी was repenting and इस दिन सुबह around 6 o'clock 7 o'clock गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हुआ। तो उसकी भी मैं बात करूंगा। So this day is the day when you pray to गौतम स्वामी। तो गौतम स्वामी का उठ के सुबह आप टेक अ शावर and without eating anything, आप गौतम स्वामी का रास, गौतम स्वामी का छंद, गौतम स्वामी के श्लोक जो होते हैं, गौतम स्वामी की जो मालाएं होती है, वो आप गिन सकते हैं। और गौतम स्वामी के बारे में भी बहुत सारी बातें करूंगा। बट दिस इज द डे व्हेन यू प्रे टू गौतम स्वामी, जिनकी तस्वीर यहाँ पे रखी हुई है हमने। तो दिस इज द 2 मेजर इवेंट्स जहाँ पे वीर प्रभु अटेंड निर्वाणा एंड गौतम स्वामी अटेंड केवल ज्ञान। उसके बाद दूज आती है कार्तक वध बीज। तो महावीर स्वामी भगवान गुजर गए, उनका निर्वाण हो गया। तो उनके जो भाई थे, वो भाई नंदीवर्धन को बहुत दुख हुआ। He was very attached to महावीर स्वामी, क्योंकि महावीर स्वामी उनके छोटे थे। तो he was extremely attached to महावीर स्वामी और उनको बहुत दुख। तो वो 3 दिन तक लगातार रोते रहे। तो उनका शोक दूर करने के लिए उनकी बहन प्रियदर्शना ने नंदीवर्धन को नंदीवर्धन को अपने घर पे बुलाया ताकि उनका शोक दूर हो एंड he will feel little better। तो उस वजह से भाई दूज आती है, जिस दिन भाई अपने बहन के घर पे जाते हैं, वहां पे उनका डिनर करते हैं और बहन को ब्लेसिंग्स देते हैं। सो दिस इज अनदर प्लेस वेयर भाई बहन के रिलेशनशिप को जैनिज्म में सेलिब्रेट किया गया है। सो दिस इज कार्तक वध बीज, व्हिच इज कॉल्ड भाई दूज। अच्छा, डज एनीबॉडी नो गणपति इन जैनिज्म? जैनिज्म में भी गणपति है, इसको पता है क्या? हमारे जैनिज्म में बहुत पावरफुल गणपति है। हम ओके, गणपति का दूसरा नाम क्या है? हिंदुइज्म में क्या बोलते हैं उनको? विघ्नहर्ता, राइट? हमारे जैनिज्म में भी एक गणपति है।
क्या आपको पता है वो गणपति कौन है? नहीं, गणपति है। तो जो जैनिज्म के गणपति माने जाते हैं, he is considered विघ्नहर्ता of Jainism। हाँ, नहीं, मैं पढ़ा नहीं है। I will give you a clue। उनके बारे में मैंने अभी थोड़ी बात की। गौतम स्वामी, yes, गौतम स्वामी is considered the गणपति of Jainism। You know why? इनके बारे में कहा जाता है, हम लोग इस जो मूर्ति पूजक संघ है, जो श्वेतांबर है, उसमें एक श्लोक आता है, अंगूठे अमृत वसे लब्धि तणा भंडार श्री गुरु गौतम समये मनवांछित फल। अंगूठे अमृत वसे यानी कि जिनके थंब पे अमृत रहता है। तो ये क्यों आया, उनके थंब पे अमृत क्यों रहता है? तो कहा जाता है कि गौतम स्वामी व्हेन ही वाज अलाइव, उस टाइम वीर प्रभु को पूछ के वो अष्टापद पे गए, which you cannot go there anymore। पर अष्टापद में हमारे बहुत बड़े जैन टेम्पल्स है, वहाँ के गत चौबीसी, ये चौबीसी और आने वाली चौबीसी के बहुत बड़े टेम्पल्स किए हुए हैं, और वहाँ पे गौतम स्वामी फ्लाई करके गए। तो कैसे फ्लाई करके गए? जो सनराइज होते हैं उसको उन्होंने लैडर बनाया, एंड ही क्लाइंब दैट लैडर एंड ही वेंट टू अष्टापद। यू कैन नॉट गो देयर एनीमोर। तो वहां पे गए, तो उन्होंने यात्रा करके वहां पे ही वाज कमिंग बैक डाउन। तो वहां पे 1503 तापस थे जो जैनिज्म में नहीं थे। तो उन्होंने गौतम स्वामी को, उनको एक फास्ट थे, किसी का एक फास्ट था, किसी के 2 दिन का फास्ट था, किसी का 3 दिन का फास्ट था। तो गौतम स्वामी के पास एक छोटे से पतिया में खीर थी, तो वो खीर उन्होंने अपने थंब उसमें डाला और 1503 को वहां पे पारणा करवाया, सबको पारणा करवाया। फिर गौतम स्वामी के हाथ से पारणा हुआ, 501 तापस को वहीं पे केवल ज्ञान हो गया। दूसरे 501 जन को गौतम स्वामी के साथ वो जब वापस यहाँ भरत क्षेत्र में आ रहे थे, महेश्वर भगवान के समोसन में जा रहे थे, तब उनको केवल ज्ञान हुआ। तीसरे 501 तापस को जब महावीर स्वामी का समोसन देखा, तब उनको केवल ज्ञान हुआ। दूसरी बात, इन्होंने 50,000 लोगों को दीक्षा दी। कितने? 50,000। हर एक को केवल ज्ञान हुआ। जिसको भी इन्होंने दीक्षा दी, चट मंगनी पट गया, चट मंगनी पट गया, दीक्षा दी, केवल ज्ञान। महावीर स्वामी के साथ ऐसा नहीं हुआ। महावीर स्वामी ने 18,000 को दीक्षा दी, सबको केवल ज्ञान हुआ ऐसा जरूरी नहीं था। इन्होंने दीक्षा दी, केवल ज्ञान 100% गारंटी होना ही है। अगर इन्होंने दीक्षा दी है, गारंटीड आपका बहुबार हो गया, आपको केवल ज्ञान होना ही है। तो इसकी वजह से उनको विघ्नहर्ता कहते हैं। दी अदर थिंग, इनके पास महावीर स्वामी के से भी ज्यादा लब्धियां थी। लब्धियां मीन्स पावर। तो कहा जाता है कि ये जब सपोज यहाँ से चल के जा रहे हैं, बाजू में पानी का बहुत बड़ा तालाब है, पॉन्ड है, ये चल के जा रहे हैं, जो हवा बहती है उनके शरीर को छू के पानी को छूती है। कोई भी बंदा वो पानी को पिएगा, 6 महीने तक उसको कोई भी बीमारी नहीं होगी, अप टू 6 months गारंटी, कोई भी बीमारी उसको नहीं होगी। तो कोई भी जैनिज्म में कोई भी अच्छा काम करते हैं गोइंग फॉरवर्ड, प्लीज रिमेंबर गौतम स्वामी एंड से गौतम स्वामी's name before you do anything good in your life। इनके बारे में मैं बोलना चाहूँ तो पूरा दिन बोल दूंगा, but I'm seeing some signals that we need to wind up. I need to keep moving forward, so I'm going to cut it off। पर पूरा दिन बोल सकते हैं इनके बारे में, इतना उनका लब्धि है। तो all I request is ये आगे जाते हैं, जब भी अगर कोई अच्छा सा प्रसंग हो रहा है आपके घर में, तो गौतम स्वामी का नाम लिखिए। अगर आपके घर पे कोई सपोज वेडिंग है, हम लोग वेडिंग इनविटेशन पे लिखते हैं गुरु गौतम स्वामी ने नमः, इसके लिए लिखते हैं। Okay, is Kavi Vaidya here for YGA introduction? Yeah. So we have to take just about 5 minutes to introduce about YGA. Hello everyone, I'm Kavi, and this year I'm the West Regional Coordinator for Young Jains of America. So Young Jains of America is a daughter organization under JANA, and we focus on promoting Jain education and social engagement among people ages 14 through 29. And as the regional coordinator, I'm the one who's in charge of all of these events and initiatives for the Western United States and Canada. And so if any of you are interested or want to learn more, you can find me at some point throughout the event. It's a really good way for people like high schoolers and others of our age
to meet other Janes throughout the US, especially coming from a smaller but growing. It's a good way to meet others from our background. We do have an event coming up next week on Friday, so, a dinner in Beaverton, and if any of you are interested, I can help you sign up to attend. But I really hope that if you know anyone in that age group, 14 to 29, that you will tell them about YJA and tell them that they can contact me and provide any phone number or email, and I can get into touch with them. But thank you for listening. That's about it for now. You can come find me at any point during the event. Thank you. Okay, so we had announced in our WhatsApp group that if you RSVP before the 8th of October, you will be entered in the lucky draw. So we are going to do that lucky draw right now. Here's the price. So one price is your book visa, but the other thing is the family who wins this jackpot will be the first family to tour the center exclusively once we have it. They will be the family, the lucky one. And only that family will be invited to come and visit the center when we have that goal. So can we see the wheel, please? Use your name to Divya over there. We will invite you and your family. We'll set up some time with you. We'll coordinate the day and time with you for you and your family to visit the center. Okay, so we'll now go on to performances part 1. So oh, yes, right. Voice stage, Aroli. Yeah, if you can please stand up and there we go. All right, so I'm going to introduce Vidhi to coordinate the dance performances of this. Let's keep our kids encouraged throughout by giving them a big round of applause. Thank you. हेलो जय जितेंद्र प्रणाम myself Vidhi मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ without wasting any further time let's begin the celebration so कोई भी अवसर बनाने के लिए बाजे गाजे और मेहंदी की तो ही रचना करनी पड़ती है मानते हो कि नहीं right so इसी तरह आज की हमारी very first performer Hedwig is going to perform on Mehendi Rajan Rang भक्ति प्रभु के नाम की
प्रीशा और अग्नि हमें ये सिखाने कि धर्म के रंगों में जो चल पड़ोगे तो हो जाएगा आपका बेड़ा पार। चौगाला तारा, चबीला तारा, रंगीला तारा, भेरू जो की तारी वाट गए। प्लीज वेलकम प्रीशा और अग्नि। कहते हैं बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। कहते हैं बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। अगर भगवान का रूप मानते हैं तो इनकी छोटी सी बात क्यों नहीं समझ पाते कि हम सब एक है, हम सब जैन है, ना तो श्वेतंबर है ना दिगंबर है, क्योंकि हम सब एक
है हम सब जैन हैं. You're presenting our kids group ad on हम सब जैन हैं by Kia, Nivansha, Nivanbal, Misha, Riddhi, and Ridan. Please welcome them with a big round of applause. प्रभु ने मुक्ति का पथ दिखाया, पथ को हमने ही पंथ बनाया, पथ के ऊपर एक बिंदु लगाया, बिंदु में मुझे सिंधु बनाया, इस पथ को हमने कहां पहुंचाया, किसने दिया, हमने किसे हराया, हमने किसे संतों का, ग्रंथों का हमने सार नहीं जाना, अनेक मत बना दिए, अनेक अंत नहीं जाना. जिनका नाम लेते ही धड़कन तेज हो जाती है, जिनका नाम सुनते ही अनेक भक्तों की भक्ति बढ़ जाती है, ऐसे 3 लोग के नाम गिरनार मंदन, राजू का तारहार, श्री नेत्र भगवान की अर्चना करने आ रहे हैं दिया और भूमि. प्लीज वेलकम दिया एंड भूमि.
Very big applause for Dia and Bhumi. And now, how can we not forget the endless efforts that we have put days and nights, joy, sorrow, happiness, spent in receiving and achieving what we have been able to achieve. Can you guess what it is? एक समाज के हिसाब से, संघ के हिसाब से आज हमने क्या हासिल कर लिया है जिसकी खुशी का रीजन हम मना रहे हैं. किसी ने बोल दिया. All have been, we have been waiting for this moment out. हो गया है and you're working towards it. The Jain Community Center, right? Yes. So ये शुभ अवसर, शुभ दिन, ये शुभ खुशी को मनाने के लिए आ रहे हैं the very beautiful ladies of our Samaj. Please welcome Sangeeta ji, Beena ji, Kevin ji, Sheila ji और Sangeeta ji को. Please welcome them. Next part of the
Again, everyone. कहते हैं कि हम लोग जब दोहा जोड़ते हैं, फिर कुछ स्तोत्र करते हैं, कुछ मंत्र बोलते हैं, राइट? लेकिन उसमें जो पुण्य बनता है ना, उससे ज्यादा पुण्य गाने से बनता है और संगीत बजाने से बनता है। जितना पुण्य ये लोगों ने बनाया ना आज, हम लोग कभी नहीं बना सकते। So let's give them again a big round of applause. So next up, we would like to do tapasvi anumodana. So, oh, I forgot my flicker. So I would like to request my son and Pritiben to come up on the stage. Would like to do their Goman for doing Pathai during Paryushan. I'd also like to request our board of trustees, Hemal, Sanjay, and Nilesh to come up on the stage to do the Tapasvi Anumodana. Can I have Hemal, Nilesh, and Sanjay please come up on the stage? गाइस, हमारे में कितने सारे लोग ऐसे हैं जिनको एक उपवास भी नहीं होता। इन लोगों ने 8 उपवास किए, 28 किए। उनको बहुत बहुत अनुमोदन करके बधाई करते हैं। अनुमोदना 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 अनुमोदना। और from me and the entire security committee, board of trustees, and the police branch. Again, मेरे से तो एक या दो पास लोगों ने मेरे बेटे की तीसरी 28 है, प्रीति जी की आई थिंक 4th या 5th 28 है, और अजीत सर को हमेशा हम लोग की उम्मीद करते हैं। So you started this year, ठीक है, तो ये बार इस साल में हमने किया तो खूब बोलना ही थी। Okay, and these are all the folks who did the first year during permission, so we would like to recognize them as well. These are the list of people who did either one pass or one Vyasana, one Ikasana, or some any tapasya like that. These are list of folks from 14 and above, and this is the list of folks of 13 and below who did any tapasya during permission. और इस बार हमने हमेशा हम हर साल पर्यूषण में जो 28 करते हैं हम उनकी हम पूजा करते हैं, बट इस बार हम डिसाइड किया कि हम जो आमिर की कुली की है, जैसे अजीत सर ने की, उनकी भी हम पूजा करेंगे। तो ऐसा क्यों किया हमने? द रीजन इज कि पर्यूषण जो है वो शाश्वत नहीं है। Maybe lot of people don't know this. पर्यूषण जो है वो शाश्वत नहीं है, आमिर की कुली शाश्वत है। सो डिफरेंस क्या है? शाश्वत है मीनिंग जो था, जो है और जो रहेगा। जो पर्यूषण के बारे में ऐसा नहीं कहा जाता। पर्यूषण पिछले 400-500 साल में आया है, और पर्यूषण वहाँ महाविद्य क्षेत्र में जहाँ सिमंदर स्वामी है वहाँ पे सेलिब्रेट नहीं किया जाता, जबकि आमिर की होली ना कि भरत क्षेत्र में, बट जो कि बाकी जो 2.5 क्षेत्र कहे गए हैं जैनिज्म में, वहाँ हर जगह
आंबेल की होली की जाती है, पर पर्यूषण का ऐसा नहीं है। तो द मोर इम्पोर्टेंस ऑफ इन जैनिज्म इज आंबेल। पर लोकप्रिय जो पर्व है वो पर्यूषण माना जाता है, बट द इम्पोर्टेंस पुण्य वाइज और जिसका रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में बहुत सारे डिस्क्रिप्शन आता है, महिना सुंदरी और श्रीपाद राजा की बहुत अमर कथा है, वो आंबेल की होली पे बेस्ड है। तो दैट्स व्हाई वी वांटेड टू रिकॉग्नाइज अजीत सर फॉर प्लेइंग द आंबेल। 9 दिनों उन्होंने आंबेल किए हैं। Okay, I would like to take another minute now to recognize folks for doing community service. I would like to thank all the kids in the Pathshala for doing a sandwich seva project. This is something that we started earlier this year, and a lot of kids have participated in this. This is an initiative that we are doing as a part of our PVSA program, which is the Presidential Volunteer Service Award. So if the kids they achieve certain number of hours towards the community service throughout the year, they will get a Presidential Medal of Honor directly from the White House. So I would like to thank all the kids for putting together sandwiches and giving it to a non-profit organization. Another project that we have been doing since last 2 years, since the start of COVID, is this Seva project, where we provide food for the River District Navigational Center, where we serve meals for 65 people. This program has been going on for every month since 2021, and we provided 14 meals this year instead of 12. So we give 2 additional meals this year because we are able to get some cash donations from some of the members of our Samaj. There are still signups available for December. So as I marked up here, we are planning to make minestrone and bean soup. My wife has signed up, but there are still 2 more slots available. There is a slot available for dinner roll as well as chips, salad dressing, and any fruit. Here is why I think this is very important. These folks at RDNC, they give shelter to homeless people. What do these homeless people have? They have absolutely nothing, right? Absolutely nothing. That's the other one thing. The other thing is most of the meals that will be served at this shelter will be non-veg. They will have some form of meat in it. When we create these meals, they are all Jains. They are all vegetarian meals. So there is no killing of animals involved. So उसकी वजह से हमें भी पुण्य मिलता है. So I would highly encourage each and every one of you to sign up for this effort. My wife is going to go and donate some food today. She prepared meals for 65 people today in the morning. So we are going to donate today, and there is 2 more dates coming up in December. So the other thing is, if you cannot help prepare the meals, then you can donate money as well. And here's a list of all the people who have helped us throughout the whole year in terms of either preparing the meals or helping us with cash donations to cover our costs. Again, if you cannot prepare the meals, please help us cover our costs by providing cash donations. If you'd like to make a donation towards this noble cause, please see Divya Jain over there in the back, and you can give cash or check made up to JSOSW. Okay, donor बहुमान तो ये क्या है? अभी हमने सुना दीदी ने बोला कि हम यहाँ पे जैन सेंटर बनाना चाहते हैं, राइट? तो लास्ट ईयर अबाउट मार्च या अप्रैल में आई फ्लोटेड दिस आइडिया कि हमारे यहाँ पोर्टलैंड में क्यों एक जैन सेंटर ना हो, हमारे बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए और हम सब के लिए एक ऐसा सेंटर क्यों ना हो जहाँ पे हम हमारे त्योहार, हमारे पर्व हमारे हिसाब से मनाएं, नॉट कि बाकी सबके रूल्स के हिसाब से बनाएं। तो पर्यूषण में मैंने आप सबको बोला था कि आइए प्रार्थना कीजिए, एक साथ मिलकर कीजिए कि हमारे यहाँ पे जल्दी से सेंटर बन जाए। तो ये लोग वो हैं जिन्होंने इस आइडिया को रियल होने के लिए सपोर्ट दिया है। They were the few people who stepped up to the plate and gave a lot of money as well as showed a trust in the committee that was put together to make this project success. So we'd like to take a few minutes to recognize each and every one of them. Again, I would like to request the executive, the board of trustees, Hemal, Sanjay, and Nilesh to come up to the stage, please. So we'll start. And if your name is here, white, can I have 2 people of your family please come up to the stage so that we can do your one. So can I have 2 people from Sanjay's family, 2 people from Nitesh and Niha's family, and can I request my wife to join up here on the stage, please?
Can I have one more person from Sanjay's family come up here? Ritesh and Neha Jain, can I have 2 people from their family come up here, please? And my wife, please come up on the stage. You guys can come from the front here. Is Hemal here, the audience? So these families have donated about $50,000 or more to make this center happen. Let's give them a big round of applause. Okay, guys, you know, we not be sort of through, but we take sort of refreshment in the morning. We can do better than this. I know there's a lot of people here. Come on. Where is Neha? Call it. Hemal, are you here? Hemal. This one is a gift box in the front that thank you for your donation on behalf of the Center of Oregon and Southwest Washington. And on the top is 24 paper cards. In the bottom, there is Naukar Mantra and Panchitiya. There is a signature card. And each of these families is given one of these for donating 50,000 and more. But ladies and gentlemen, Anumodana, 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 Anumodana. Thank you for the donation. Can I request the BO team please stay here for the next level of donors? Okay, we have these families who donated between 25 to 50K. Can I request 2 people from each of these families to come up on the stage? So Hemal and Manisha, Girish and Pravina Shah and family, Nilesh and Preeti Jain, Chirag and Preeti Shah, Vishal and Karnika Nishar, and Kaushik and Sasi Shah. If any of these people are present in the audience, can I have them come up to the stage? 2 people from each family, please. And then people, Sonal and Chetan Shah are not present here. They are in India. And Girish Shankar is also in India.
We are missing here Kaushik uncle. We have Kaushik and Sashi uncle. Coming for their, they are coming. They need RSVP. So, and I think Krisha uncle is not here, and Sonal is also here. So once again, thank you for your donation. No more than no more than Ashash. And then finally, at the silver level, these are the families who donated $15,000 to $25,000. And I have Ritesh Jain and Anji Singhai family, Atul and Rupal Shine family, Naresh and Divya Jain family, and Harshal Jain in California. But can I have the first three families, 2 people from each family, to come on the stage again? Naresh sir, please, Divya ji, Atul and Rupal Shah, are they here? I think they are here. Yeah, can you please come on? And then I think Ritesh Jain is also here, if I'm not mistaken. Can we have them come on to the stage, please? Once again, thank you very much for your donation. Thank you so much. And we would also like to thank Divya Jain. She has committed to donate additional $5,000 in technology products and laptops, projector, whatnot, towards the center in 2023. So once again, thank you so much for your donation. So take a few minutes, give us a update on the center where we are with this project and what's going on. I don't know about you guys, but जब भी मैं अपने center के बारे में सोचता हूँ, I get goosebumps.
I literally get goosebumps. मेरे पूरे शरीर के सारे रोंगटे खड़े जाते हैं. The feeling that you get is कि यहाँ पे हमारे भगवान आएंगे. और भगवान आते तो क्या होता है? पता है? किसको पता है? भगवान आते तो क्या होता है? आपका भोपाल हो जाता है. चंदन बाला के का भोपाल किसने किया? महावीर स्वामी ने किया. उस टाइम उसकी सिचुएशन कैसी थी चंदन बाला की? She was a princess, right? But उसके बाल कट गए थे, सिर मुंडन हो गया था, उसके हाथ और पैरों में बेड़ियां थी, उसके पास 3 दिन का उपवास था, हाथ में पापुला ही थे, और वो जो अपना डोर होता है उसका आधा शरीर डोर के अंदर था और दूसरा आधा शरीर डोर के बाहर था. भगवान वहाँ पे वो लेने आते हैं, गोचरी लेने आते हैं. भगवान के आई थिंक 6 महीने के तपस्या थी और वो पारणा करने के लिए गोचरी लेने बाहर निकले थे. वो आते हैं और चंद्रमाना को देखते हैं. भगवान की बहुत कंडीशन थी कि मैं पारणा उसी से करूंगा जिसके बाल कटे हुए हो, जिसके हाथों और पैरों में बेड़ियां हैं, और जो जिसका आधा शरीर घर के बाहर है और जिसका आधा शरीर घर के अंदर है, और जिसकी आंखों में आंसू है. भगवान ने चंद्रमाला को देखा, सब कंडीशंस मेट हुई, पर आंसू नहीं थे. तो भगवान चंद्रमाला को देख के वापस मुड़ गए. तब चंद्रमाला को हुआ कि भगवान क्यों वापस से आ रहे, कि आप भगवान मेरा उद्धार करने थे और आप जा रहे हो. उस पर एक बहुत अच्छा सुंदर स्तवन है, वी आर नॉट गोइंग टू दैट. पर चंद्रमाला वहां पे रो पड़ी, उसकी आंखों में आंसू आ गए कि भगवान आप मेरा उद्धार करने आए थे और आप चल दिए, तो मेरा उद्धार अभी कौन करेगा. तो भगवान ने फिर देखा कि उसकी आंखों में आंसू है और उन्हें लगा कि मेरी सब कंडीशन सेटिस्फाई हुई है, तो वो चंद्रमाला के हाथ से बापू लेके लेके अपना पारणा करते हैं. तब क्या होता है? तब वहां पे चमत्कार होता है. देव आते हैं और वहां से पुष्प वृष्टि करते हैं और चंद्रमाला के बाल आ जाते हैं और बहुत अच्छे सुंदर कपड़े लगते हैं. तो चंद्रमाला becomes the first साध्वी जी of महावीर स्वामी भगवान. तो हमारे यहाँ पे भगवान आएंगे तो क्या होगा? हमारा कुछ हो सकता है. तो मैं जब भी ये सोचता हूँ, आई गेट थ्रिल, आई गेट एक्साइटेड. और जैसे मैंने कहा था लास्ट ईयर, we gave an idea. I gave an idea to the committee and on committee बोला कि let's see what happens. Let's see what where we end up in. So to give us an update as where we are with the center, request Hemal and Nikesh Jain and give us share more details with us. Thank you, Bhavan bhai. So how many of you remember last year summer picnic? How many of you were there? See, only a few hands. So one thing, last year when we were there, I think we made this vision for our community that we wanted to have a center, our own community home where we can actually worship. We can, as Bhavan Bhai was saying, we can do our annual event. We don't have to be bounded by the places and their rules and regulation, and we can celebrate the way we wanted to do. So we took this sort of a vision to set a center by next year, and just wanted to keep an update where we are. And I think both Hemal and the entire committee and us, we are very pleased to announce that we have purchased the property. So I want to give you a quick, and I think the interesting thing is just happened before we close this one. So November 4th was the closing date. So it's really fresh out and share with you guys. We have the keys in our hand now. We have the keys in our hand. So I think without any ado, we wanted to have a quick 2 minutes presentation. Wanted to show what that property looked like. I know many of you haven't had a chance to see. So why don't we play that video and let you guys enjoy the property that we just closed.
So I think we purchased the property, and I think as Bhavan said, that all the folks who have made this generous donation, with their help, actually, we were able to secure the property. This, I mean, just to give you a quick timeline in terms of what we presented during the summer picnic, that we will have collect enough fund that we can actually purchase the property, and we just purchased the property. In terms of our, now we move into from phase 2 to phase 3. In terms of what our timeline looked like, we are actually applied. We have applied for all the city permits to make it a temple and a center where we can have large gatherings and so on and so forth. So we are working through that process. That will take a couple of months to get all the permits in place and everything. And during that time, I think we wanted to modify this property. You saw that, and this property looked gorgeous. It meets all our needs, the size we are. So we wanted to put this in shape so that we can, with that, getting the permit, our plan is by March, we should be able to do a Bhagwan Pravesh in Q1 2023. Well, we wish that we had all the money to purchase this property by putting the 100%. Unfortunately, I mean, or I think we are still short of that. So we actually end up taking loan from bank. This property was 825. We put about 30%, 35%. We put 35% down payment and took some loan. And some of us actually have given a personal guarantee to secure this loan. And our hope is within next year or so, we should be able to pay off this loan and own, or this community own this property 100%. So that's our timeline for next 18 months. The phase 3, set this property, make it functional, and pay off the loan so that the Samaj owns this property rather than the bank owns this property. So that's our timeline. And then I think we wanted to move into a future expansion once we pay off the loan and do the remodeling and build the full data center. And so that's phase 4 from a development perspective. So here's a quick snapshot in terms of where we are. As I mentioned, that we took a loan, about $500 million loan here on this property, that we pay off this loan. Up to that, we would require about 50K of renovation to get this property in shape. So make sure that we everything in place. It's a proper place where folks can come. The one thing which I wanted to highlight, that I mean, if we keep this loan longer, we will be paying interest. So in next 5 years itself, I mean, if we just look at that, I mean, we will be paying over 100,000 in interest. So our goal is to pay off as soon as possible, as quickly as possible, so that we can use this 100,000 to a renovation and much more that we wanted to accomplish.
So that's our goal. So I definitely request the folks who have not considered, folks who have already donated. I think now it's real. I mean, so far it was like when we will have the property, what we are going to do. Now it is real. So we would like to have you guys make generous donation to close this loan and own this property. Another advantage, I mean, not only that, we pay off and save 100K. Our operational expenses right now, because of the bank requirement and everything, close to 70K per year, which is pretty substantial. And if we pay off, we'll be shaving off another 30K per year. So over a 5 year, we have another 150K we can save by paying off loan. And if you don't want to donate, I mean, we would be happy to take interest-free loan or low interest loan. I mean, if you are willing to do that and you have any way you can help us, I think that'll be great. So our goal is to pay off this loan as quickly as possible, so that we can actually don't require 750K rather than we require 500K. So that's our goal. If we can save that 250 additional we'll be paying to the bank, we can make use of remodeling this property the way we wanted. We can't emphasize this enough. If you committed to us that you're gonna pay the money for the center, this is the time to step up, do them. If you already committed to the center, please step up right now, because like Ganesh was saying, this is the time that we really need your help. This is the time that we want to shave our interest payment from 750 to 500,000. The earlier we pay off, the better it is for the Samaj and for the center, and we can get into the center fast. There are various ways you can donate. I mean, you saw that there we have a different levels of donation. I mean, you can donate stocks, you can donate cash, you can pay in terms of your time. There are various ways you can contribute to make this center a reality. So in terms of levels, before we get to the levels, I guess our goal for today is to raise 100,000. I mean, that's a pretty challenging goal, but we are very confident that we should be able to meet this goal. So we are looking for folks who can contribute, and I'm sure it's not that difficult to achieve. I mean, we are looking for pledges. We are not looking for a check right now, and then the various ways you can donate, and we'll go into the detail of how and what are the different ways you can donate and what labh you get by those donations. So let me get into that. But our goal is to really, I mean, when we get out of this event today, finish that, if we can get the pledges of 100K, I think that's what we are looking for. So please help us, please, please, please. Okay. So as you saw, there are different labh. I mean, there were donor Bhavan that Bhavan Bhai just did. Actually, there are two different circles that we launched last year in our summer picnic, where we had the founder circle. Founder circle, where you actually have different levels: silver, gold, diamond, and platinum, and different amounts are listed. The requirement for the founder circle is you have a one-time payment that you're making, and you can make before the Bhagwan Pravesh in March 23rd. That's what our goal. So please consider founder circle, and that will really help us pay off this loan. That's what we need. I mean, is very critical for us to save interest payment, operational costs, and that's a significant saving here we can achieve. And if you feel like you're not willing to donate, you're willing to take a donate the interest-free loan or the low interest loan as well. So please come contact us so that we can pay this loan off as soon as possible. The second category is the sustaining circle. This actually really helps us from an operational perspective. So I wanted to, I mean, this, if you look at here is as simple as, I mean, as small as silver level, you're looking for 3K per year. It's not a significant amount of donation. It's a very small donation. We are looking 3K, that over 5 years adds up to the 15K, as small as that. And again, we have silver, gold, and diamond level for that as well. And you can spread over 2 years, 3 years, maximum 5 years.
And there are benefit of this lab that you get. And you can come and contact us in terms of a different lab and what benefit of each of the circle level we will have. So please open your wallet, open your heart again. We will have Sanjay and Deepal will be distributing some envelopes. It's one per family. So please sign up and return those envelopes to one of us in executive committee or board of trustee or Divyaji over there who is sitting. So please take your time and fill out that donation form and give it to us towards that. And the center is not for our generation, right? It's not for us or our, it's for the nation. It's not for the nation. So if you can open your hearts and your wallets and just, help us reach our goal, we would really, really appreciate it, and especially our next generation would really appreciate it. If you can hear me in the back, let me know and I can speak to the now. But this is for our next generation. We would really appreciate it if you can help us reach our goal. Our goal, like they said, is for 100,000. And like you said, we are not looking for a check today. We are looking for commitment from you that you will pay us or you will help us. Apart from, I think we talked about the circle levels at the picnic as well, but on this auspicious Diwali celebration, we wanted to actually introduce a new lab today, is a Kalprush tree. This is a tree that we are going to place in our center when it is renovated. It's going to be a decent size, visible for the folks, and you can actually donate per leaf for this Kalprush tree or can be part of that. The donation for that is we are expecting a $5,001 for a leaf and $10,001 for a trunk. But just for today, we actually have a 50% discount on this. I mean, you can't get any better than that. So for a leaf, we are looking for 2,500, and for trunk, we are looking for 5,000. So please, I mean, again, this is one-time opportunity to take a lab and contribute towards the center. So this tree will be placed in our new center. We don't know the size of the tree. I think it will be covering one of the big walls at the entrance. We don't know the exact location, but it will be covering pretty much the whole wall on one of the entrances of our new center. So just to give you an idea. So on each team, it's one per family, so it's not one per person, it's one per family. So if somebody says their name, then it'll be written there. The Himmelshine family would be one, right? So it's one per family, and each family would have a name in Sanjay and his wife, they are distributing the envelopes on every table. Folks who will make commitment today at either the leaf or the trunk, we are going to have those families come up here and do the work on it. So please think about donating today. And as they said, it's a 50% discount. हम बनिए हैं, discount हमें खींचता है, ये भी discount है, खींचो यार. Thank you, Bob. By the way, whoever makes a commitment for the leaf or the trunk, we have a tree there. So the family will come up here, write their name on the leaf or the trunk, and put a note there on the actual live tree so that everybody in the Samaj can see their name. So again, this is a big law. This is a law that very few people get. Here's the thing. मेरी generation में, मेरे family में, as far as I know, पिछले 5 या 6 पीढ़ी में किसी को भी लाभ नहीं मिला मंदिर बनाने का. ये बहुत अद्भुत लाभ होता है. हमारे शास्त्रों में इसके बारे में बहुत कहा गया है. बहुत कम लोगों को मिलता है ऐसा लाभ. Don't let this go. I'm telling you, don't let this go. जैसे मैंने आपको घंटा के बारे में बताया था, ये दूसरा ऐसा लाभ है जो बहुत कम जो rarely आता है. So do not let this go. जो भी आपसे बन सके, जितना भी बन सके, please step forward. Thank you. Now the other thing that we thought, why just adults? Why not kids can take part in building their future center or their home so that they can enjoy. And for that, actually, we are introducing this
for kids to raise funds. I mean, kids can be part of this. I mean, all they have to do is collect money from your friends, family, or maybe your everyday allowance. I mean, just $1 a day that we are looking for. So please sign up for those as well. If you are interested, let us know if you want to participate. And this is a year-long commitment that we are looking from kids. So it's if you put $1 a day, it's $365 a day. I mean, that's over a period of a year, you can, I'm sure, collect more than that. The kids can contribute towards that. And the kids' name will be displayed on our JSOSW website. Whoever has participated, contributed towards that. So please encourage kids, because it's their home, their center. We are doing for the future community. So having them involved in this, really, I think this is a really great opportunity for kids to be involved in raising funds for the center. This doesn't mean that the kids have to come to the center every day to talk about it. We would love it if they come. Don't get me wrong, please. But we'll talk to you about the logistics. But what we're trying to achieve is that get kids involved with the center. So. The other thing which I think we wanted to highlight, that we said we wanted to raise 100,000, but if your company matches, you actually stretch that dollar to make it double or triple. So there are opportunities which you can actually make use of it to stretch your contribution. The first one actually is many companies here in this area, Nike, Intel, and if you're employed to many of those companies, check out from your HR department if they have a ability to match. So this 100K we are trying to raise is all require 50,000. I mean, and if your company is matching or doubling, tripling, I mean, we can hit that goal today. I mean, it's not difficult. There's $1 match for many companies. Nike's double match is coming up very soon. Sometime in November. I don't know the exact date, but it's sometime in it's a giving Tuesday. It's a Thanksgiving week, I believe, right? Yes. Yeah, it's a Thanksgiving week, but basically, if you donate $1 in the month, Nike is matching $1. You have $1 $3. So it's a double match. Right. So center gets 3 times the amount. So that might be double matching. So just an FYI. You can also volunteer match. So if you're working for these companies, many of them, I work for Intel, I know Intel actually pays $10 every hour I spend. So if I talk for an hour, you'll get $10 because I'm going to report to the Intel. So please, if you are participating, you're volunteering for the events, you're volunteering for centers, you actually can log those hours to get a $10 per hour of your contribution to a nonprofit charitable organization that and center get. I think last year we had, if I'm not wrong, Ajit he's not here, but I think he can correct me, close to $4,000 we got from these volunteer hours or so. How many are using Amazon? Can you raise your hand? I guess everybody's using. Are you guys familiar with Amazon Smile? Okay. How many are not familiar with that? If not, then you can pull out your app right now on your phone. Just go to the settings, look for Amazon Smile, enable it, search JSOSW, and that's it. And JSOSW will get 0.5%, 0.5% of every purchase you do. And it doesn't cost you anything. I mean, it's a free of cost for you. You're doing your shopping at your convenience, and we are getting 0.5%. That's as simple as that. And I believe last year we had close to, $50 to $100 or something that we collected through this. I mean, it's a small amount, but it adds up. So please, if you haven't done that, pull out your phone and do it right away. It's a small one because a lot of people still don't know Amazon Smile. A lot of people assume that it's costing them a certain amount, that's why they don't use it. But to you, it should not cost anything. And I guess I won't take much time, but we are registered on all of these organizations, whether if your company is using Benevity, Your Cause, Fertility Charitable,
and Amazon sites, you can find out. And if you're not using app and using browser for Amazon, use smiles.amazon.com instead of amazon.com. Just bookmark that link and use your shopping through that if you're not a big fan of apps and things like that. So much for asking for money, but I think we have opportunity to even get benefit for contributing your time. And now we have a center which has been built. We have to establish that center. We have to do renovations. We have to raise the funds. We have to make it operationalized. We have to take care of the building. Lot of help needed. A lot of help. Organize the events, coordinate all the people coming there, a lot of work needs to be done, right? It's just not, center is just the beginning. This is the first step. This is the beginning of our journey. Now the real work starts. And so the envelope which people and Sanjay has just distributed has an opportunity for you to sign up for each of these different committees that we are actually collecting volunteers. So if you have, if you are available, you have interest, we need your help, not only money but time as well. So please give us your name so that we can plan accordingly as we start putting together the center, set up the whole infrastructure here. Does anybody have any questions or did we want to cover something? Has any question that you would like us to answer? Okay. Okay, I wanted to take a minute to talk about a story about Bhima Kudalia. तो आप में से कितने लोग पालीताना गए हुए हैं? बहुत सारे लोग गए। वहाँ पे पालीताना में जब आप यात्रा करते हैं, अगर आप नहीं गए हैं तो मेक श्योर यू गो। अगर आप मूर्ति पूजा में नहीं मानते, कोई बात नहीं, जस्ट गो अप देयर टू सी द आर्किटेक्चरल ब्यूटी ऑफ दिस टेम्पल्स। तो ये भीमा कुंडलिया की मेरे को कहानी कहनी थी, वेरी क्विकली मैं बहुत जल्दी कह दूंगा क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। तो आज से तकरीबन 750 इयर्स अगो पहाड़शाह मंत्री थे गुजरात के, उन्होंने निर्णय लिया था कि वो पालीताना के जो हमारे टेम्पल्स है उसका जीर्णोद्धार मीनिंग रेनोवेशन। उस टाइम पालीताना का जो मेन टेम्पल था वो वुड का बना हुआ था और द थिंग वाज कि वुड का टेम्पल धीरे-धीरे उसकी लाइफ खत्म हो रही थी। तो पहाड़शाह मंत्री ने डिसाइड किया कि आई विल रेनोवेट इट और उस पूरा टेम्पल में बनाऊंगा पत्थर का ताकि वो कई जनरेशन तक रहे। तो उन्होंने एक छरीपालित संघ निकाला एंड दे ऑल केम टू पालीताना एंड पालीताना में आए तो सब के साथ संघ में जो उनके साथ दूसरे लोग आए थे, देयर वर लॉट ऑफ पीपल हु हैड लॉट ऑफ मनी। तो उनको पता चला कि पहाड़ मंत्री रेनोवेशन करने वाले पालीताना के टेम्पल का। तो उन्होंने पहाड़ मंत्री को विनती की कि हमें भी ये लाभ दीजिए, ये लाभ हमें नहीं मिलेगा। हम जानते हैं कि आपके पास इतने पैसे हैं कि पूरे पालीताना का रेनोवेशन आप करवा सकते हैं, बट हमें भी ये लाभ दीजिए, हमें ये लाभ से वंचित मत कीजिए। तो पहाड़ मंत्री ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट डे उन्होंने सबको बुलाया और उन्होंने अपने जो बुक कीपर होता है उनको बोला कि इनमें से जिनको भी जितने रुपए लिखाने सबके नाम लेना शुरू कर दीजिए। तो जो लोग साहूकार थे, जो पीपल वर्ड मनी, कोई ने लाख रुपए लिखा है, कोई ने 50,000 रुपए लिखा है, जिसकी जितनी शक्ति थी। तो वहां पे वो भीड़ में एक गरीब आदमी था जिसके फटे हुए कपड़े थे, मुंह पे ऐसे लगता था कि जैसे उसके पास कुछ भी पैसे नहीं है। ही वाज लाइक अ पॉपर। तो उसको भी पैसे देने थे, पर इतनी भीड़ थी और लोग उसके कपड़े देख के उसको भीड़ में आने ही नहीं देते।
वो लोग उसको धक्का मार के बाहर निकालेंगे, इसके पास क्या हो गया, ये थोड़ी पैसे लगाएगा। तो बाहर मंत्री ये सब तमाशा देख रहे थे, तो उन्होंने अपने सेवकों को भेज के उस आदमी को बुलाया और बोला कि क्या नाम है तुम्हारा और यहाँ क्यों आए हो? तो उसने बोला मेरा नाम भीमा है और मैं भी इस अच्छे कार्य में अपना नाम लिखाना चाहता हूँ। तो बोलते बहुत अनुमोदना आपकी, आपको कितने रुपए लिखाने? तब भीमा की आंख में आंसू आ गए। उसने बोला मैं इनके जितना पैसा नहीं है मेरे पास आपके जितना भी पैसा नहीं है। मेरे पास घर पे सिर्फ एक गाय है, गाय से जो दूध निकलता है वो दूध बेच के मैं और मेरी पत्नी अपना गुजरान चलाते हैं, लिविंग बियॉन्ड आवर लिविंग। और इस वक्त मेरे पास 1 रुपया और 7 पैसे है, 1 रुपया और 7 पैसे थे। उसमें से मैं अभी मैं जब गांव में था तब मुझे पता चला कि आप ये रेनोवेशन करने वाले हैं, तो मैं गांव से आया, ऊपर पालीताना की यात्रा की, 1 रुपये के भगवान को सब फूल चढ़ा। अब मेरे पास सिर्फ 7 पैसे है, 7 पैसे। थिंक अबाउट उसका बैंक बैलेंस, उसका पूरा लाइफ का अर्निंग, जितनी भी उसकी संपत्ति थी, जितना भी उसके पास पैसा था, सीडी, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, कैश, सेविंग्स, जो भी बोलो, कितने पैसे थे? 7 पैसे। 7 पैसे में क्या होता है? कुछ नहीं होता। दिस हैपेंड अबाउट 750 years ago। उसके आंख में आंसू हो गए कि मेरे पास सिर्फ 7 पैसे है और मैं पूरे 7 के 7 पैसे देना चाहता हूँ। हमारे पास अगर $10,000 है और ऐसा कोई आता है तो हम लोग कितना लिखाएंगे? ज्यादा से ज्यादा 500, 1000, मे बी 5000। हम में से बहुत कम, आई वुड से नॉन ऑफ अस विल गिव ऑल ऑफ our $10,000। भीमा ने बोला मुझे मेरे 7 पैसे लिखा है। तो बाहर और उसकी आंख में आंसू आ गए। तो बाहर मंत्री ने वहां पे अपने बुक कीपर को बुलाया और बोला कि इसका नाम सबसे पहले लिखो, सबसे ऊपर, सबसे आगे बड़े अक्षरों में इसका नाम लिखो। तो सब चौंका गए कि क्या हुआ, ये तो फर्नीचर लग रहा है, इसके कपड़े फटे हुए, इसके पास पैसे नहीं, इसका नाम क्यों सबसे ऊपर लिखा है? तब बाहर मंत्री ने बोला कि आप लोगों के पास जितने पैसे हैं उसमें से आप शायद 1%, 2%, 5% लिखा है। इसने अपनी पूरी संपत्ति दे, पूरा जितना भी पैसा था सब दे। तो सब की आंखों में आंसू आ गए और सब उसकी अनुमोदना करते हैं। फिर ये भीमा कुंडलिया बहुत खुश होकर घर पे जाता है। घर पे उसकी बीवी राह देख रही है और उसके मुंह पे मुस्कान थी। तो बीवी ने बोला अरे वाह, तो लगता है कि वो बहुत आमदनी हुई होगी इसलिए इनके मुंह पे बहुत मुस्कान है। तो बीवी ने पूछा इनके क्या हुआ? तो सोचो अगर हमें से कोई अपने घर पे जाता है और पूरी आमदनी, पूरा सेविंग सब कुछ दे दिया है, हमारे बेटर हाफ का रिस्पॉन्स क्या होगा? दिस अप्लाइज फॉर बोथ हस्बैंड एंड वाइफ, राइट? मैं और मेरी वाइफ या फिर इसमें अगर लेडी है तो उनका स्पाउस का रिस्पॉन्स क्या होगा? कैन यू गेस उसकी बीवी का रिस्पॉन्स क्या होगा? शी गॉट मैड, शी गॉट रियली मैड। लाइक कैसे कर सकते हो? हमारे पास 7 पैसे थे, वो भी आपने दे दिए। 1 रुपया 7 पैसे थे, चलो 1 रुपया तो आपने भगवान को चढ़ा दिया, 7 पैसे भी दे दिए। बहुत झगड़ा कर दिया उसको, बहुत झगड़ा कर दिया। शी गॉट फ्रीकिंग मैड। और गुस्से में वो बाहर निकल गई, जो गाय थी उनके घर के बाहर, उसको धोने के लिए, उसमें से दूध निकालने। वो धो रही थी और गाय उस तरफ उस टाइम एकदम से उसने अपना सिर मुंडाया और जो खिला रखा था जिसपे उसकी रस्सी बांधी थी वो खिला निकल और वो खिला काटने जाती है तो वहां पे उसको जमीन में एक चरो दिखता है, a pot of gold full of up to the brim with gold coins। तो बहुत खुश होती है, वो लेके आती है भीमा कुंडलिया के पास, ये देखो 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 मुझे क्या मिला, देखो मुझे आज क्या मिला। बहुत खुश होती है। भीमा कुंडलिया की एक प्रतिज्ञा थी कि जो उसका नहीं है वो खुद नहीं लेगा। तो वो बहुत खुश होता है और बोलता है कि ये मेरा नहीं है, मेरी प्रतिज्ञा है, मैं ये नहीं ले सकता। मैं ये कल जाके बाहर मंत्री को दे दूंगा और उनको जो भी करना है रेनोवेशन के लिए यूज करना है वो कर सकते हैं। तो दूसरे दिन वो पूरा पॉट ऑफ गोल्ड, जो गोल्ड का बना था, और वो पूरा अप टू द ब्रिम गोल्ड कॉइन से भरा हुआ था। सो यू विल बिकम फिल्दी रिच, रिचर देन एनीबॉडी ओवर देयर एक्सेप्ट फॉर बाहर मंत्री। इतने पैसे आ गए उसके पास। पूरा लेके गया वो बाहर मंत्री के पास और बाहर मंत्री को बोला कि आप ये रख लीजिए और ये मेरे पैसे मुझे ऐसे मिला और आई डोंट वांट टू कीप इट। तो बाहर मंत्री ने बोला कि नहीं, ये तुम्हारा पुण्य उदय में आया है, इसलिए ये पैसे तुम्हारे, तुम इसको जो करना चाहो उसका भेजो, वो करो। तो वो भीमा बोलता है नहीं मुझे नहीं चाहिए। बाहर मंत्री बोलते हैं नहीं आपको चाहिए, आपको लेने ही पड़ेंगे। तो उन दोनों में डिस्कशन हो रहा था। तो भीमा वाज नॉट विलिंग टू टेक दैट मनी।
तो वहां पे पालीताना के जो यक्ष है, कपर्दी यक्ष, वो प्रकट होते हैं, बोलते हैं कि भीमा, तुम्हारा पुण्य, तुम्हारी भावना देख के ये पैसे मैंने तुमको दिए, ये पैसे तुम्हारे, तुम्हें लेने हैं इसको, और इसका जो भी करना है तुम करो। तो उस टाइम फिर आफ्टर लॉट ऑफ हेजिटेशन भीमा कुंडलिया वो पैसे स्वीकारता है। तो पुण्य का ऐसा है कि पुण्य जितना आप करो विदाउट हेजिटेशन करोगे ना, उतना जल्दी वो उदय में आएगा। इसमें भी ऐसा होगा, अगर आप सोच सोच के पैसे दोगे ना, तो पुण्य भी सोच सोच के ही आएगा। ये जो भीमा कुंडलिया ने अपना पुण्य उसी टाइम क्या बोलते हैं आ गया उसके पास। तो थिंक अबाउट दैट, उसमें से उसने पैसे लिए और बाकी के जो थोड़े बहुत पैसे थे उसने रेनोवेशन में दिए। और वहां पे जब हम ऊपर जाते हैं तो भीम कुंड बनाया हुआ है, वो भीमा कुंडलिया ने बनाया हुआ। तो थिंक अबाउट इट, 750 years ago ये इवेंट हुआ, आज हम उसका नाम इतिहास में लिखा गया है। This is your chance to make history for our center. This is your chance to write your name in history, to make sure that our generations, future generations, have a center, have a place to worship, where we can play with our own rules, not with somebody else's rules. So please, 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 please think about this, and please try to donate as much as you can. The other thing, नीलेश जी ने बताया कि we will spend $100,000 in interest. तो बैंक क्या करेगी, वो पैसे लेगी और वो पैसे वो इसको भी दे सकती है, राइट? They can give it to a company that sells meat products. They can give it to a company that will make weapons. उसका बाप किसको लगेगा? हमको लगेगा। जीन शासन के पैसे हैं, उसको अच्छे मार्ग में जाने चाहिए। तो why not help us reduce that loan amount and reduce our interest amount so that we can have a guaranteed future for our own generations. Thank you. Okay, so we wanted to bring a proposal to for all the Samaj members. As you know, we started a new committee last year. And with the center and with all the things going on, we would like to propose that we continue Bhavin as a precedent for one more year. As you remember, if you read the documents and all the other things we've been sending out, that president's post was only supposed to be for 1 year, and then he moves on to the board of trustees. But with the center and with a lot of things going on around with our committee right now, we would like to propose that he continue for 1 more year, and we would have Ritesh Jain. I saw him here somewhere. We would like to propose Ritesh Jain stand in as a vice president. We would bring this proposal to our December meeting. The other thing we wanted to also highlight that Deepavali, who actually is current secretary, was stepped in to fill up the mid-year transition of the secretary post. So we wanted to also nominate her as a elected secretary for 2023 and 2024 as well. So this is a new committee proposal, as Emil mentioned, that we wanted to put forward. And we'll bring this for vote in December meeting to close on that. But if anybody has any concern and objection, please do let us know. If you remember, Dipti stepped in the middle of the year when Vipasha Jain left us. So if anybody has any questions or concerns, like Manish is saying, please let us know, and we'll be more than happy to help. Okay. Can you hear me? Okay. I wanted to take a few quick minutes to talk about the meetings that we are going to have in the center.
So this is an effort that has been in the making for the last few months. I've spent a lot of time and effort to try to get this done. So here is the motives that we are going to get. But before I go into those details, I just wanted to remind everybody that when we presented this vision for the center, we had decided at the time that we'll get 2 Shwetambar Murtis, 1 Digambar Murti, and we will have a Guru Mandir. And all of these Murtis will be with Adhar Abhishek, meaning that they will not be doing Anjal Shalaka. So we can have these Murtis for darshan as well as puja, but you don't have to do puja every day as required in a Murti with Anjal Shalaka. So we are going to get 3 Murtis. The Mulnak is going to be Shri Vimalnath Swami Bhagwan. Bolo Shri Vimalnath Swami Bhagwan ki jai. The other Murti would be about for a Digambar Pratimaji, and then we'll have one more Pratimaji which for Shwetambar. All of these Murtis are going to be Panchadhatu, and we are not going to get any marble Murtis for now. If you guys have any questions why we are not doing that, I can give you an answer, but I don't want to go into those details right now because we are running short on time. Feel free to catch me on the hallway, give me a call afterwards, and I'll give you all the answers. But right now, we are going to get this Panchadhatu Pratimajis, and here is an example of the Pratimajis that we are going to get. Besides, so for our Digambar and for the additional Shwetambar Murti, the idols are not decided. The choice is we have Adishwar Bhagwan, Shitanath Bhagwan, and Shriyamsnath Bhagwan, Santinath Bhagwan. And the way this works is depending upon the mold line you have, the other 2 Pratimajis get decided. We are trying to see if we can get also Mahashwami Bhagwan as well as Pashwan Bhagwan for our center, but we are still working on, I'm still working on behind the scenes. I'm very happy to say that all of these murtis are going to be made in Palitana on the 15th of November in front of 250 Sadhu Sadhvijis along with 16 Acharya Bhagwan. So these murtis are going to be blessed by a lot of our Sadhu Sadhviji Bhagwans. And the good thing is the cost about for these murtis and some of the items that we need for getting the temple up and running to have a functioning temple comes to about $6,000 or $7,000 plus shipping. The shipping comes to about $1,500 or $2,000, and we have found sponsors to cover all of these costs. So we have sponsors in India who have stepped up to the plate to cover the cost for making these Pratimajis. We have found sponsors in India who are going to help us cover the cost of the items that we need. And there is one person here in US, he lives in Redmond, who has agreed to cover the cost of getting these items shipped from India to US. Bolo Jina Shashana, Deva ki jai. This is a cost of $7,000, $6,000 to $7,000 that our Samaj is saving. So again, I cannot emphasize enough. People are dying to get this kind of labs in India. Okay, this is a lab that you are getting here. घर बैठे वो कहते हैं ना लक्ष्मियाँ आई है, ऐसा है. घर बैठे लक्ष्मी आई है और बनिया है ना चांदा करने के लिए नहीं जाते. लक्ष्मी आती है ना तो वहां पे हम लोग बोलते हैं चांदा कर लीजिए, मैं मुंह धो के नहीं आता हूँ, क्योंकि क्या होता है लक्ष्मी जी राह नहीं देखती. वो आप अगर बोलेंगे मैं मुंह धो के आता हूँ तब तक लक्ष्मी चली जाती. So be a baniya and take these labs and please donate as much as you can. Okay, so we will now with that we'll go into performances part 2. Can I request Vidhi again to come up to the stage to coordinate this section? Thank you so much, Bhavin Bhai. Okay, keeping the performances going on, we have a couple of more performances. So let's keep the enthusiasm going. तो जैसे अभी हमें बताया गया है कि हमारे समाज में श्री जिनराज जल्द ही पधारने वाले हैं, तो इसी खुशी को और इसी भाव को बरकरार रखने के लिए आ रहे हैं हमारे नेक्स्ट ग्रुप परफॉर्मर्स. Presenting to you Arna, Dhriti, Hetli, and Arham. Please welcome them with a big round of applause. जाने अनजाने में पाप तो हुए हैं हमसे, ये मानना पड़ेगा, वरना मंदिरों के द्वार इस तरह बंद ना होते, बंद ना होते, बंद ना.
Okay, so now we are very, very close to reaching towards the end of our celebration in terms of performances. So मैं एक बात आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ that ये हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है कि हम यहाँ अपने जैन धर्म को इतना आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं in whatever way we can, और ये भी हम हमारे बच्चों को भी सिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो इसी कोशिश को और इसी खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए आ रहे हैं all the adults of the group. So here's presenting Vidit, Jigar, Hemal Bhai, Dishit, Tejan, and myself. Please give all of us a big round of applause.
Okay, so now we have the very last performance of the celebration. Here's presenting our sorry. Let me get it. So here's presenting playing the piano on Rome Rome. Please welcome Adrian.
आपकी आवाज की गुंजाइश यहाँ तक पहुंची नहीं है. Please have a big thank you all of you for your patience and sitting throughout our performances. Please forgive me अगर मेरी से कुछ गलती हो गई हो और मैंने किसी की feelings को hurt की हो. दिल से मैं चाहती हूँ to all of you. And next year we are more and more excited to have more people participate, come forward, and I promise अगर ये इस टाइम पर accommodate नहीं किया हो for whatever reason, I promise next time people in March for Marvin Kalyan. Thank you very, very much. Thank you, Vidhi ji. All of the performers to come on the stage. Let's welcome them with a big thunderous round of applause. Tanya, can I have all performers please come up on the stage? It's time for you to take out your cameras and start taking pictures. Please come. All the performers, please come. Come on, guys, we can do it. I know it's lunchtime, but if you are hungry, but you can do this.
Next pictures. Everyone, thanks to all the performers for your hard work. They have put in significant amount of efforts in practicing and coordinating all these activities. Let's again thank them again for doing a wonderful, wonderful job. Okay, I would like to also do Anubodhana to Vidhi Jain and Jigar Shah for coordinating all these dance performances. They also choreographed and put in a lot of time and effort to make this a success. So let's give them a big round of applause. And Jigar Shah and Vidhi Jain come on the stage. Thank you guys. Thank you very much. Without you guys, this would not be so much of a success. Thank you so much for coordinating everything. I know it was a lot of hard work, so we really appreciate it. The Samaj really appreciates it. I'd also like to invite Deepavali and Surbi Ben Javeri for helping us do all the decoration that we are seeing around you. I have Surbi and Deepavali come up here, please. Thank you so much for helping us. We came here at 8 o'clock sharp to help us set up these decorations that you see all around, including the concept of the year. So thank you once again to Deepavali and Surbi Ben for the hard work. I would like to thank the folks who were behind the scenes who did not come up front, but they were coordinating a lot of things like the projectors and the music and audio, make sure everything is working fine. So can I request Vidit and Pratik Jain to come up to the stage? And Nishit as well. Please, that is all that the officer who coordinated everything. My microphone is working. I needed to speak. Please come here. And also, I would like to thank all the volunteers and a lot of folks who came up here in the early morning at 8 o'clock, help us set up all the tables and the chairs and get everything going. So if your name is not on the slide, mistake is on my card, it's not on your part. I would like to thank all of the volunteers, people who helped us bring the food, help us coordinate a lot of things behind the scenes. Without your effort, this would not be possible. So I would like to thank Parsha, Nishit, my son, and few other folks who came, Himal and Malaysia, Jain for coming up here early, help us set up and decorate this place. All right, so now is the time to figure out how did we do. Are we meeting our goal or are we beating our? इस बात पे मैं एक और funny कहना चाहूँगा, एक real quick छोटी सी कहानी. This is a true event. जैसे मैंने भीमा कुंडलिया के बारे में बताया था ना, भीमा कुंडलिया ने तो अपना नाम इतिहास में लिख दिया. उसका नाम 750 साल यानी 750 years के बाद भी हम आज याद कर रहे हैं, तो उसका नाम तो अमर हो गया. हम में से कितने लोगों का नाम अमर होगा, we'll find out. पर एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो मैं बताने जा रहा हूँ वो आपके साथ किसके भी साथ हो सकता है. इंडिया में एक बंदा था, अपने 5 साल के बेटी को लेके देरासर में जाता है. तो देरासर में जाते वो मूर्ति पूजक थे, देरासर में जाते भगवान की पूजा करते, अर्चना करते. फिर उसके बाद जो भंडार में भंडार भरने का टाइम होता है, तो मेरे जैसा आदमी
भी था, उसने अपना वॉलेट निकाला, उसमें से 2 रुपए या 1 रुपया ऐसा कुछ निकाल के अपने 5 साल के बेटे को दिया, बोला कि बेटा ये भंडार कर दो। तो बेटे ने पूछा कि पापा हमें भंडार क्यों कर, हमें भगवान को पैसे क्यों दे रहे हैं? Does anyone know the answer? क्यों भंडार करना होता है? भगवान क्यों पैसे देते हैं? किसी को भी पता है? Anybody? हाँ? Yes, to do पुण्यानुबंधी पुण्यम. Thank you. तो हमारे शास्त्रों में 4 प्रकार के पुण्य पाप कहे हुए हैं. पुण्यानुबंधी पुण्य, पुण्यानुबंधी पाप, पापानुबंधी पुण्य, पापानुबंधी पाप. 4 हुए. पुण्यानुबंधी पुण्य यानी आपका जो पुण्य से पैसा आया हुआ है और आप या कोई भी अच्छा पुण्य से आपने कुछ भी कमाया हो, कुछ भी मिला हो आपको, वो आप पुण्य के मार्ग पे खर्च कर. जैसे कि सपोज मेरा पुण्य है, मेरे पास जॉब है, मेरे पास पैसे है और मैं उसे अच्छे मार्ग पे खर्च कर रहा हूँ, तो वो पुण्य हुआ जो आपको इस भाव में और आने वाले अगले भाव में काम आता है. दूसरा होता है पुण्यानुबंधी पाप. तो पुण्य है मेरे पास पर मैं उसके पैसे पाप के लिए खर्च कर रहा हूँ, जैसे कि मैं मूवी देखने गया या फिर मैं बाहर रेस्टोरेंट में खाया, तो उसका होता है पुण्यानुबंधी पाप. फिर होता है पापानुबंधी पुण्य. तो जैसे कि आपके पास पैसे आए, स्टॉक मार्केट में आपका बहुत तेजी आई और यू मेड अ लॉट ऑफ मनी, तो स्टॉक मार्केट इज कंसिडर्ड एज गैम्बलिंग. तो गैम्बलिंग में आपका पाप हुआ, पर आप वो पैसे जो आते हैं उसको आप अच्छे मार्ग पे खर्च करते हो, जैसे कि मंदिर में खर्च करते हो या भंडार में खर्च करते हो, तो उससे आपको होता है पापानुबंधी पुण्य. फिर होता है पापानुबंधी पाप. तो आपका पाप से आया हुआ पैसा आप पाप के मार्ग पे खर्च करते हो, जैसे कि मेरा स्टॉक मार्केट में बहुत पैसे आए एंड आई बॉट अ मर्सिडीज बेंज एंड नाउ आई एम गोइंग अराउंड, उससे होता है आपका पापानुबंधी पाप. तो 4 प्रकार के होते हैं पाप पुण्य. तो ये बेटे को, तो ये आदमी ने 1 रुपया दिया और बोला कि भंडार में डालो. अभी बेटे को तो 5 साल का बेटा था, उसको तो पता नहीं था कि ये पाप पुण्य क्या होते हैं. तो वो मेरे जैसा होगा आदमी, तो उसने बेटे को समझाने की कोशिश की. अगर आपको आपके 5 साल का बेटा पूछता है कि पापा हमें ये अच्छे मार्ग में पैसे क्यों खर्च करने चाहिए, तो आप क्या बोलेंगे? हाँ, पुण्य मिलेगा, राइट. बट 5 साल के बच्चे को पुण्य नहीं पता है, पाप भी नहीं पता है, पुण्य भी नहीं पता है, क्या बोलेंगे? भगवान खुश होंगे, भगवान हमें ये 1 रुपये के कई गुना रुपये ज्यादा देंगे. तो अभी वो 5 साल का बच्चा बहुत स्मार्ट होगा, शायद वो अमेरिका में बॉर्न हुआ होगा, इतना स्मार्ट था, तो बोलता है कि पापा हम लोग अगर भगवान 1 रुपये का अनेक गुना रुपया हमको वापस देते हैं, तो आपने भंडार में 1 रुपया ही क्यों डाला? आप अगर बोलते हो कि भगवान हमें 1 रुपये का अनेक गुना रुपया देंगे, तो आपने 1 रुपया ही क्यों डाला? राइट. हमारी भावना ऐसी होती है, भगवान को जब देने का समय आता है ना, तो हम लोग 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया ऐसे देखते हैं. पर जब उसी टाइम हमको हमारे वेकेशन के बारे में प्लानिंग करना होता है ना, then the sky is the limit. We want to spend as much money as we want, and then we want to have vacation because we are going to have fun. पर जब भगवान के पास के लिए पैसे खर्च करने आते हैं, तब सोच के पैसे खर्च करते हैं. तो हम लोग तो बनिए हैं. भगवान अगर हमको 1 रुपये का अनंत गुने रुपये देंगे, तो हम लोग तो बनिए ऐसे घाटे का सौदा क्यों करेंगे? ज्यादा पैसे देंगे तो ज्यादा हमको मिलेगा. एंड आई हैव एक्सपीरियंस दैट माई सेल्फ पर्सनली. आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू. आई हैव सीन दैट हैपन इन माई लाइफ. मैंने भगवान को 1 दिया, उससे दोनों हाथ से इतना दिया मुझे कि आई कैन नॉट बिलीव इट. ट्रू स्टोरी. मैं जब यहाँ पे आया 1999 में, आई कम फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली. मैंने बहुत सारे लोगों को ये नहीं बोला है. I came here with just 2 bags and $20 in my pocket. That's all I had. इसके पीछे मुझे बहुत श्रद्धा है. मेरे लाइफ में मैंने कोई भी प्लानिंग नहीं किया. एवरीथिंग मेरे लाइफ में जितना भी हुआ है, इसने प्लानिंग किया है. मैं लास्ट ईयर मुझे कोविड में मेरा बिजनेस बंद हो गया. मैंने बोला कोई बात नहीं, whatever you decide is the right thing. मुझे जॉब मिली नॉर्थ कैरोलिना में, में, और मैं सोच रहा था कि मेरी फैमिली को वहां पे मूव करूं. बट आई डिड नॉट वांटेड टू डू दैट. बाय हेजिटेशन आई वाज गोइंग टू डू दैट. माय फैमिली टू नॉर्थ कैरोलिना इन राले एरिया. तो मैंने भगवान बोला कि भगवान मुझे नहीं करना है, मुझे नहीं जाना है, और मेरा एक ही अभी गोल है
पोर्टलैंड में मंदिर होना चाहिए. बस दैट इज माय होल एंड सोल एम इन माय लाइफ कि पोर्टलैंड में कुछ भी हो जाए मंदिर कर रहा है. मैंने भगवान को बोला अभी तू फिगर आउट कर कि मैं कैसे वापस आऊंगा. Somebody in March found out that I moved to North Carolina. That person said, "Bhai, send me your resume. Let's discuss." He gave a recommendation for me, and that's how I found my job and I came back. Again, I never planned this. All I said is, "Bhagwan, पूरा रास्ता दिखा." I was looking for job everywhere, all over the place, ताकि मैं यहाँ पे वापस आ सकूँ. He figured out a way for me to come. Out of 100 or so applicants that I applied, मेरे boss ने मुझे बोला 100 or so applicants applied. I was the only one who was selected. There was only one position. Why? I got his blessings. So again, I would recommend, please don't hesitate to spend money. Open up your wallets, open up your hearts. क्लोजेट में सब क्लोजेट में लाइट बोला उसको तो एक में भी नहीं लगाई इसने. जब भी इसके बारे में सोचता हूँ, है ही इसके बारे में सोचता हूँ क्या अपन इसलिए देखा. जब मैंने ये आइडिया फ्लोट किया तो मैं अकेला था, but the executive committee at that time they said they are behind you and they were truly behind me all the way through. इतनी देर चलेगा ये कपड़े पहन रहा है तो नहीं करता है. तब नहा के आता है निकल रहा तभी लाइट बंद करो हाथ धो. Whether we are $100,000, we are more or less. So can I have Hemal, Dinesh and Sanjay come up to the stage? तो वेलने सब हटाओ जल्दी आ, तो मीटिंग आ रही है. अभी किसी ने कर दिया इन्होंने. रिया टिया उसको बोल सकते हैं कि अपन के एक बार हमको एक्सप्लेन कर दे कहाँ क्या है. टेबल तो वो दिया है तो दारू टेबल तो साफ कर ले. So we have a calculator and we are going to add up all the amounts live in front of everybody ताकि कुछ भी behind the scenes नहीं है. सबको पता रहेगा कि क्या कितने पैसे आए कितने रुपए आए. दूसरी बात मैं बोल रहा था कि भगवान अनेक गुना देते हैं, राइट? आपने कभी फार्मर को देखा है? लाइक फार्मर जो प्लांट करता है सीड्स, राइट? तो फार्मर क्या होता है, पहले तो ये खेत में ट्रैक्टर और सब नहीं था, तो इधर आ जल्दी. जो बैल होते हैं उसके पीछे हल लगा के पूरी जमीन को रेडी करेगा एंड देन के फार्मर के कंधे पे क्या होगा और उसमें उसके अनाज के दाने होंगे और वो ठीक भर के ऐसे पूरे खेत में फेंकेगा, राइट? ही इज नॉट थ्रोइंग इट इन वन लाइन और एनीथिंग. वो ऐसे ही फेंकेगा ताकि उसको पता है, क्या पता है कि मैं एक दाना दूंगा इस जमीन को, वो मुझे 1000 गुना करके देगी. ये जमीन ऐसी है, ये जमीन उस दाने को 1000 गुना करके देगी. So let's start adding the numbers. First we have all the envelopes. And if there are any people who are watching live on Zoom, if they want to contribute as well, can we have somebody who is there? सही है, काले का पानी निकाल दिया. अब तो हमको एक्सप्लेन कर दे थोड़ा बहुत. No. So if anybody has contributed for leaf or the trunk, please be ready. We are going to announce your name so that you can come up here, put your name on the leaf or the trunk, and put a sticky note on that tree. So please be ready. So the first name we have is Himanshu Jain and Ritika Mono, and they are going to contribute at silver level. Anumodana, Anumodana, Anumodana. आ ही नहीं रहा है, मीटिंग चालू होने वाली है और बताने.
रखो सुन, अपन तो उसी से पूछेंगे तो किसी काम की। ये भी रख लो फिर मैं क्वेश्चन है इसमें से। We'll do Anumota at the very end. Sir, लगता है कि we have a lot of papers, so we'll put that at the end. And please be ready to have a thunderous round of applause for all of these students. Okay, so let's add 50,000 here. Oh, yes, it's a silver level. So we are assuming it's at 15,000. So the silver level is $15,000 to $25,000. We are assuming it's $15,000. You're welcome to give your name in public and the amount that you're donating. If you want to do that, if you feel comfortable, that's fine. So I'm asking the family, Himanshu Jain and Vitika Bonot, are you doing at 15,000 or you are doing more? And if you don't want to disclose the amount, that's fine too. You'll just say you are at silver level. So, okay, we'll add the company matches later. So, who is Himanshu Jain? Do you guys want to publicly announce how much you are donating? 15,000? Okay, so 15,000. We have another silver level donor, Sachin Kumar Jain and Sangeeta Jain at $15,000. And company match. So, who is this family? Thank you so much. Again, same question for you. Do you want to announce the amount we are donating publicly between 50 to 25? Do you know an amount that you want to donate? 15. Okay, 15,000. So we are at 30,000. Yeah. So once we have all the names announced, please have all the donors be ready to come up on the stage. So the next one is the drops on the tree, which is the Kalpavriksha tree. By the way, Kalpavriksha tree के बारे में किसी को पता है क्या? Kalpavriksha tree क्या होता है? What? It's a wishing tree. Yes, it's a wishing tree. तो पहले के ज़माने में ऐसा होता था, ऋषभ के ज़माने में वहाँ पे उनके टाइम पे ऐसे एक कल्पवृक्ष ट्री होते थे. उनके पास जाओ, आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा. आप उनको बोलो कि मुझे पैसे चाहिए, पैसे मिल जाएंगे. उस टाइम पैसे थे ही नहीं. The concept of money wasn't there because कल्पवृक्ष tree would fulfill all your desires. आपको भूख लगी, बोलते मेरे को खाना चाहिए, खाना मिल जाएगा. आपको बोलते मेरे को घर चाहिए, घर मिल जाएगा. आपको सोने चांदी चाहिए, मिल जाएगा. So that's what this Kalpavriksha tree is. Your name would be added to that Kalpavriksha tree in our center. On one more silver, Sanjay Kumar Jaroli and Ranjana Jaroli at silver level 15,000. And have that plus very short match. So next one is Trump, Nidhi, Vidit Parekh and family. And they are going to donate at the trunk level, $5,001. Huh? Yeah. So can I have Vidhi and family come up and then write their name and put their name on the trunk, please? Huh? Yeah, go ahead, please. Next one for trunk is Niku and Vinesh Shah and family. So can I have one person from that family come up to the stage and write their name on the trunk, please? Guys, we are at $50,000 already at 50% of our goal. This is exciting. This is super exciting. And we are not done yet. Okay, next one is my name, Bhavin Shah. This is, I think, a donation from my mom and my son for a trunk for 5,001. So can I have maybe my son and my wife come up and put the name on the trunk? So
तो पेपर वाला तो एक बार वो जो इस पे डायग्राम है, यानी इसमें तो बहुत कम मार्क है, इसमें ऑप्शन। यही फाइनल पेपर है क्या? तो कैंडिडेट बेडरूम का कुछ चक्कर था होता है। तो બધા कुछ आ ही नहीं रहा वहाँ पढ़ाने। Next one is for silver level is Nirmal Jain and family. Nirmal Jain, can you please stand up? Nirmal Jain, yeah. Okay, is in your father's name? Toku or more than 50,000 and more. Okay. Next one is electronic level. Vidhi Pratik Jain and family. Can I have Vidhi or Pratik come here, put their name on the trunk as well, please? Almost there, almost there. Last few. I don't know about you guys, but I'm in goosebumps right now, as of right now. Okay, next one. Surbhi Javedian family on the trunk for $5,001. Somebody was trying to say something. He raised and somebody started. Nobody. Chat. We cannot hear anything. Second one is Sachin Vaya and family for trunk. I have 5,001. I have Sachin Vaya. And it will also have a property man. So if it's an Intel, I think we'll get an additional 5,000. Or 9, then we'll get triple match. Yeah, triple match. I like that. Okay, 10 more to go. 10 more to go. We can do this. We can do this. We can do this. Next one is Nitesh and Hemal Shah, again for trunk at 5,001. 5 more to go. 5 more to go. Compliment. Next one is for Lee, Atul Shah and family for $2,501. Can I have Atul Shah? Come here, put your name on the leave, please. Huh? This one has no company match. Okay, maybe 2,500 more to go. 2,500 more to go. Can you do this? Vipin and Chandrika Vaidya for a leaf at 2,501. So we are going to go. अच्छा एक और बात है, भगवान के नाम पे याद आया, हमारे छोटे जो तीर्थंकर है उनके नाम के पीछे बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। Maybe you might know this, जैसे कि महाविष्णु भी भगवान का दिया हुआ जैसे पेरेंट्स ने नाम दिया था वर्धमान से। पता है आपको वर्धमान क्यों दिया नाम उनको? उनके जन्म के बाद जैसे ही वो माता की कुक्षी में आए हर वृद्धि होने लगी। जैसे कि गेहूं है, धान है, धान्य है, खेती है, उसमें बहुत वृद्धि हो रही है। शिवपाल राजा के प्रकार में वृद्धि होने लगी, सब जगह मंगल होने लगा, तो उसके उस पर से नाम आया वर्धमान। वैसे ही है शांतिनाथ भगवान, जैसे ही वो माता की कुक्षी में आए हर तरफ शांति होनी। शांतिनाथ भगवान के नाम में इतना पावर है कि आपको जैसे पहले मरकी जैसे रोग होते थे उनका नाम लो मरकी चली जाएगी, इतना उनके नाम में पावर है। फिर पाशनाथ भगवान, उनकी माता ने काले सर्प को जाते हुए देखा, उसमें से नाम आया पाशनाथ भगवान। अजितनाथ भगवान, जब वो माता की कुक्षी में आए
तो उनकी माता और उनके पिता के बीच में कोई कंपटीशन हो रही थी। पिता चाहे कितना भी कर ले, कुछ भी कर ले, हार ही जाते थे अपने ओन वाइफ से। ही ट्राइड एवरीथिंग, तो उस पे से नाम आया अजित नाग। तो वैसे हमारे हर एक 24 तीर्थंकरों के नाम के पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। तो विमलनाथ स्वामी क्या करेंगे? विमल करेंगे, मंगल करेंगे, सबका मंगल, पूरे जीन सोसाइटी ऑफ ऑरेगन एंड साउथ वेस्ट वाशिंगटन का क्या करेंगे? मंगल करेंगे। नेक्स्ट वन इज Nilesh's brother Sailesh and Pooja Jain for leaves at $2,501. You might be able to jump too. Okay. Next one. Do you want to put the leaf for him? Okay, next one is Pista by Fateh Chandji Solanki for $2,501. Pratik Jain. Can I have somebody come up here from that family and put the name? This is for a leaf as well, $2,500. Next one is for a leaf for Vipulmati Shah and family. Can I have somebody from that family please come up here? Oh, okay, they are at a silver level as well. Okay, next one. Next one is Vipasha Jain for a leaf at $2,501. Can I have Nitya or Naresh to come up here and put the name on the leaf, please? Come on, parents, you guys need to fill the gap for your daughter. And one of you, please come up here, either Divya or Naresh. Next one is Binal Mawani for a leaf as well for $2,501. Can I have Binal ji come up here on the stage, please? Next one. Okay, we have two more leaves. Jigar Shah and family at $2,501. Can I have maybe Jigar Bhai or Dipti Ben come up here, put the name on the leaf? And then one last leaf is from our secretary, Ajit Jain and family. Treasurer, yeah, he's our treasurer. The bookkeeper, the money man. So can I have one person from his family come up here and put the name on the leaf? Yeah. Okay, so we have a grand total of $130,010 without any company match. So now if we get a company match from Nike or from Intel, this amount can be significantly more. Maybe we might be close to 200,000. And that amount is $60,000. Company match. Guys, we have 5 both. Thank you to each and every one of you. And we have bonus for silver. Please come up to the stage if you would like to do your homework. And then for folks who have given the leaves in the trunk, we will do a Bowman in the future event. We are not prepared for it, so I apologize. That's my mistake as a president. I sincerely would like to say, we will do for your Bowman at a future event. We are also running short on time, so that's another reason. So please forgive us. It's my mistake. It's an oversight on my part, but we would like to definitely recognize all the silver level families. Okay, so we have 5 families: Sanjay Kumar Jaroli, Sachin Kumar Jain, Himanshu Jain, Nirmal Jain, and Vipulmati Shah. So can I have 2 people from each of these families come up on the stage, please?
I know kids are hungry. You would like to serve their lunch. आलू पानी अपना क्या We have one more leaf donation. So that makes it to 32,511 is from Vipul Oswal. Did I pronounce his name right? And that's with the company match as well. So I think we are pretty close to 200K. So please, thank you so much. Thank you so much. And I think we don't, in the interest of time, we will not be calling out the name of all the volunteers. I have seen tons of name on the volunteers are stepping up, and thank you for the sentence. Really, from our bottom of our heart, we wanted to thank you for your time and energy to make this a great success. So thank you so much. And then we have, I believe, for kids donation. And we have for kids donation or the kids fundraising. We have Nishka and Riyansh. They shall sign up for both jointly for the kids fundraising. So hope for the kids as well. Okay. ये से था Anumodana, 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 Anumodana. Come on, guys, let's give a big thunderous round of applause to all of our donors. Just everyone, but everybody who just put their name on that conversation page. We still have a lot of things available. So if you know anybody, friends, family, anywhere in the US or in India, please have them reach out to us and we will put their name on the conversation tree. So we have 108 leaves available. I think we got maybe about 15, 20 leaves today. So there's still about 80 leaves available. So please make this effort a success. You are our marketing. You are our marketing team right here. Right in front of me is my marketing team. Can you do me a favor and reach out to your friends and family? Say, please donate to this noble cause. Thank you. Thank you to all the donors for stepping up to the plate today. आपका पुण्य सोच के नहीं आएगा, तुरंत आएगा. हाँ, lunch आएगा पहले तो. Oh, we have one more simple level. Deepak Patel and family. Can we have something that can pick up here? 200. Yeah, incredible. I'm just super excited. We are at 150K. Come on, we have about 2,500 to go. Only I can 150K from folks. Who? Anybody? कोई एक ही चाहिए. 150K आज इस कंपनी में सिर्फ 200K. Come on, we have a gap of 2,500 here. एक ही leave. Come on, anybody? कौन वो बीमा कुंडलिया?
Who is a Diva Kundalia? जो हमको will bring us to 150K. Anyone? सोच के आएंगे तो पुण्य भी सोच के आएगा. It's your choice. Okay, thank you everyone for stepping up to the plate. We really appreciate it. My wife just gave me permission to donate $2,500 in my name for the leave, so we are $150,000. Can I have my wife first come up and put the name of the please while we continue with the rest of the program? Let's take the last few minutes. We are going to wrap up. I know everybody's hungry. Everyone, Uttam Shamat, everyone, if me or any of the executive committee or the board of trustees or any of the volunteers have hurt you or you're feeling the mistake is not intentional, we really sincerely apologize for hurting your feelings. So please forgive us. Okay, so now is the time for Simhu Aarti and Mangal Divo. I hope each and every one of you brought a tea light candle, patriot and candle in a plate. I have posted several messages in. Oh yeah, and one more thing, thank you for a reminder. If you guys are interested in doing the Vasakship Puja for the Gautam Swami, Mahavir Swami and the Saraswati Devi, feel free to come in and come up here on the stage and do the Vasakship Puja. There is some Vasakship here in this container. And you are welcome to the Vasakship Puja on the right knee only of the Bhagwan's idols, on the picture of the Gautam Swami, and then on the foot for Saraswati Devi. Please don't do Vasakship Puja anywhere else, okay? Just the right knees, or the right foot. So please stand up for Aarti and Mangal Divo. And we have two separate groups here in the front, gents on my right side and ladies on my left side. Gents on right, ladies on left. And you can do Vasakship Puja down as well once you're done with the Mangal Divo. So feel free to come up here. We will have the setup available. So please come up and do the Vasakship Puja anytime. But again, if you guys can please hurry up, we are running short of time. Among kids are okay. We have to give this all back very quickly at about 3:30. So please start lining up here. Gents on the my right, ladies on the left. Gents right, ladies on the left. So if you don't have a tea light with you, then you're welcome to take one from the table. But make sure you put it back. Don't take it home. It belongs to Samaj's property. So please put it back. You're welcome to take one here from the stage too, if you want one. Please, let's quickly hurry up, folks. Please don't wait. We need to get going. सावधान 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 सोने की छड़ी रुपए की मशाल जरियत का जामा मोतियत की माला बाजू से निगाह रखो जीव दया प्रतिपालक तीन लोक के नाथ प्रभु श्री महावीर स्वामी को गणी खम्मा नमो सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वसाधुभ्य
So next up we'll do Digambar Aarti. I forgot to say mention कि आरती कैसे करते हैं. सबको पता है कि आरती कैसे करते हैं? कैसे करते हैं? ऐसे घुमाते हैं.
बराबर घुमा देते हैं, पर आपका जो बॉडी पार्ट होता है ना, यहाँ पे नाभि होती है और यहाँ पे आपका श्वास है, उस दोनों के बीच में ही आपकी होनी चाहिए। ऊपर नहीं कर सकते, नीचे नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कर सकते, इतना कम नहीं कर, बिटवीन योर बेली बटन एंड योर नोस्ट्रिल्स, उसके बीच में ही आपकी रहनी चाहिए। सो नेक्स्ट विल डू दिगंबर आरती। We have the right arti, Om Jai Mahavir Prabhu, right? Is there any Digambar brothers, sisters?
Parents, real quick, if your kids are already taking food, please don't have them eat in the hallway. They are going to charge us a security deposit. So please have your kids bring the food inside. Just give us 5 more minutes. We are at the Mangal Divo. After that, we are going to some lunch. So please have your kids wait for just 5 more minutes. They are already telling us that we should not be eating outside in the hallway. So please bear with us for 5 minutes. Next up, we are going to do Divo. One more request. Please work with your kids not to waste any food. We are Jains. खाना बिगाड़ने में हम लोग नहीं मानते. हम लोग थाली धो के पीते हैं. तो please work with your kids. अगर किसी का बचा और मैंने देख लिया, parents आपको खाना पड़ेगा. I'm going to be very strict about it. No, it's not a laughing matter. I'm very dead serious about this. Please do not waste food. हमारे जैनों में बोला है कि खाना बिगाड़ना नहीं चाहिए. अन्न हमारे भगवान है. भगवान का अपमान नहीं करना है. So if you can go and take second serving, third serving, fourth serving, as many servings as you want. But please do not waste food. Thank you.
Thank you, everyone. So this would be good. We are going to have like last tables in the back go out and then go out through those double doors, get your food, and come back through these two doors. So that way we are going in a circle and we're not running into each other. Okay. So start helping yourself with the food. And again, I'm sincerely requesting, please do not waste any food. Work with your kids and make sure they are not wasting any food. Please don't go through these double doors. Go out from those back two doors, get your food, come back in through these two doors. And once again, Micham is open to anyone if I hurt your feelings. That is not intentional. If you are interested in doing Vasaksha Puja, please come up here and do the Vasaksha Puja. Thank you. Yes. Thank you. Well, I'm not sure if you guys can hear me or not, but I'm gonna turn off the Zoom now because we are starting the dinner or starting the lunch. So if you can hear me, I'm gonna turn off the Zoom. Thank you for attending and hope you have a great day. And Jai Jinendra and happy Diwali.